योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलि दानतोऽस्मि. With this traditional verse as a benediction towards the great sage Patanjali, also ascribed to be the author of the Yoga Sutra and as well as the Vyakarana Mahabhashya, we are starting our program named the Symposium on the Yoga for Women Health. I would like to invite Mr. Malay Maiti, also a member of Shastri, to give the welcome address for all. Namaste. Is it audible? Can you hear me? Yes, what is quite enough. Okay. ओम स्थापकाय धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः. नमस्कार. आज इस शुभ अवसर पर आप सभी को मेरा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन. योग न केवल एक शारीरिक अभ्यास है बल्कि एक समग्र जीवन पद्धति है जो शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को साधता है. ये भारत का प्राचीनतम परंपराओं में से एक है जिसकी प्रासंगिकता आज वैश्विक स्तर पर स्थापित हो चुकी है. विशेषकर नारी स्वास्थ्य इस क्षेत्र में योग की भूमिका अत्यंत प्रभावशाली रही है. यह न केवल रोगों की रोकथाम में सहायक है बल्कि मानसिक संतुलन, भावनात्मक स्थिरता और आत्म सशक्तिकरण में भी इसका मार्ग प्रशस्त करता है. इसी उद्देश्य में हम आज एकत्रित हुए हैं योग के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण पर विमर्श करने के लिए. आज यह आयोजन योगा फॉर वुमेन्स हेल्थ यह एक सार्थक पहल है जो शास्त्रीय और देश योगा ट्रस्ट के संयुक्त प्रयास से संभव हो पाया है. इस मंच के माध्यम से हम योग के माध्यम से नारी के स्वास्थ्य कल्याण एवं जीवन के विविध पक्षों पर गहराई से विचार विमर्श करेंगे. इसी अहम मौके पे हमें अत्यंत हर्ष है कि हमारे बीच आज विशिष्ट अतिथि एवं विदुषी वक्ता उपस्थित है. हम बुलाना चाहेंगे मिस ममता विष्ट जी को, जो जीएस कॉलेज योगा एंड कल्चरल सिंथेसिस में एक वरिष्ठ योग प्रशिक्षक है. आपका रंगमंच और रेडियो तथा भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक का गहन अनुभव योग के दर्शन में एवं व्यवहारिक पक्षों के समझने के लिए और सिखाने में अत्यंत सहायक रहा है. हम आपको सादर स्वागत करते हैं. साथ ही हम बुलाना चाहेंगे डॉक्टर रोजालिन सामंत, उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी की फार्मेसी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर. आपने नारी स्वास्थ्य और समकालीन संदर्भों में आने वाली चुनौतियों पर गंभीर शोध कार्य किए हैं. हम आपको हार्दिक अभिनंदन करते हैं. We also invite our next guest, Miss Vineeta Misra जी को. एक होलिस्टिक वेलनेस कोच जिन्होंने मॉस्को में योगा प्रशिक्षण से अपनी करियर की शुरुआत की है और आज एक वरिष्ठ काउंसलर के रूप में विभिन्न हेल्थ केयर सेंटर में संस्थानों में अपनी सेवा दे रही है. योग, पोषण और मानसिक स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में आपका योगदान प्रशंसनीय है.
आपका हम हृदय से स्वागत करते हैं। हम उन सभी विद्वान प्रतिभागियों को भी स्वागत करते हैं जो आज अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। साथ ही हम देश योग ट्रस्ट के सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करते हैं जिनके सहयोग से यह आयोजन संभव हो सका है। एक विशेष धन्यवाद श्री शुभंकर दास जी को, शास्त्री के एकेडमिक हेड और इस संपूर्ण आयोजन का मुख्य सूत्रधार भी है। वो उनके दूरदर्शी नेतृत्व, मार्गदर्शन तथा अकथ परिश्रम से इस आयोजन को साकार रूप दिया है। यह आयोजन न केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित रहे बल्कि वह मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक स्तर पर भी महिलाओं के सशक्तता में योग की भूमिका को रेखांकित करेंगे। एक बार पुनः आप सभी को संगोष्ठी की तरफ से और मेरे तरफ से हार्दिक स्वागत। आइए आप सभी मिलकर इस पथ पर आगे बढ़े। धन्यवाद। Thank you, Malay for your welcome address. This gathering is not just a confluence of minds, but of purpose. A commitment to exploring the profound role that yoga can play in enhancing and sustaining women's health across all stages of life. In a world where the pace of life continues to quicken, the ancient wisdom of yoga offers a timeless solution for physical well being, emotional balance, and inner harmony, especially for women who often juggle multiple roles and responsibilities. We are again honored to welcome you all, the experts, practitioners, scholars, and seekers who have come together to share insights, research, and practical approaches. The presence of yours today is very significant for growing awareness and importance of integrating holistic practices like this yoga into mainstream discussion on women's health. Let this symposium to be a platform for dialogue, learning, and inspiration. May the knowledge shared here today help empower not just individuals but communities at large and the whole world. With this great hope, I would like to welcome um, our first speaker. Just a minute. Pardon. So, let us move forward with open minds and open hearts. So, Miss Vineeta Misra ji would be our first speaker in this symposium, who is also a holistic wellness coach and began her teaching journey, as Malaida said, in Moscow, Russia, and has made commendable contribution in the field of yoga, food, and nutrition. She now serves as a senior counselor in the in a healthcare organization here. So, welcome, ma'am, again, and now the dais is yours. Please enrich us with your uh, knowledge. Thank you very much. So good evening all. सबको फिर से बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद सभी को आमंत्रित करने के लिए यहाँ पे। एंड सबसे पहले तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और योग के बारे में बहुत सारी चीजें कही गई हैं, बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं, बट योग जो है वो सिर्फ एक शारीरिक व्यायाम नहीं है। इट्स ऑल अबाउट आपका तन, आपका मन और आपका जो इनर वो है पीस, सब कुछ अगर एक साथ मिलके एक चीज को संतुलन में लेके आते हैं तब वो एक योग बन जाता है। एंड आज जैसा कि हमारा टॉपिक है अबाउट फीमेल हेल्थ एंड उनका जो हाइजीन को लेके हमको बताया गया है कि उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो उससे पहले सबसे पहले बताना चाहूंगी कि
फीमेल हाइजीन एंड हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जो फीमेल्स होते हैं, हम ही लाइक घर के जो मेन स्ट्रेंथ होता है, एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ होता है, दैट इज फीमेल। तो वुमेन हेल्थ इज मोर देन जस्ट फिजिकल, ये मेंटल आपका जो है, इमोशनल और जो हार्मोनल बैलेंस है, अगर तीनों को हम लेके चले तब एक फीमेल की हेल्थ के बारे में हम बात कर सकते हैं कि अगर वो मेंटली साउंड है, फिजिकली फिट है, और उनके जो हार्मोनल बैलेंसेस है, उनका हाइजीन एंड हेल्थ सब कुछ अच्छा है, तभी वो योगदान दे पाते हैं एक अच्छी लाइक सोसाइटी को। और अगर एक फीमेल स्वस्थ है तो यकीन मानिए उस घर के सब लोग मोस्ट ऑफ द टाइम हैप्पी फील करने वाले हैं, हेल्दी फील करने वाले हैं, राइट। तो आई होप यू ऑल विल एग्री दिस थॉट कि अगर एक फीमेल हेल्दी है घर में तो सब लोग हेल्दी हो सकते हैं। तो ये जो छोटा सा एक प्रयास है, दैट इज रियली वेरी मच, बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और हमारे जो एवरीडे जो टिप्स होते हैं, या फिर वाई टू मेंटेन हाइजीन, या फिर हेल्थ की हमें क्यों जरूरत है मेंटेन करने की, ये सब चीजों पे अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे सके रोज, अगर एज अ फीमेल हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे सके, तो दैट इज मोर देन एनीथिंग। क्योंकि हमको जागरूकता लेके खुद आनी पड़ेगी अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने फिजिकल हेल्थ के लिए। तो दैट इज वाई फीमेल हेल्थ एंड हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो विमेन हेल्थ के बारे में आप लोगों ने बहुत लाइक, एक होता है ना, एक बेसिक फंडामेंटल वो होता है कि हाँ सब कुछ उनका घर में शुरू होता है, लाइक टीन एज में उनको अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, फिर जब वो 20s से 30s में जाते हैं तो अलग बॉडी के हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है। फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हो सकता है, पीसीओएस इज अ बिग प्रॉब्लम नाउ, पीसीओडी वगैरह बहुत सारे यंग लेडीज को हो रहा है। देन 40s 50s में उनकी एक और स्ट्रगल होती है रिगार्डिंग मेनोपॉज एंड ऑल। एंड 50+ में मेनोपॉज के बाद उनकी उसकी हेल्थ को लेकर, बहुत सारी चीजों की हेल्थ को लेके स्ट्रगल होती रहती है। तो ये है हमारा प्रॉब्लम आज का लेडीज को लेके। तो सबसे पहले जो है, चार वो पिलर क्या होते हैं, जैसे एक कुर्सी के चार पाए होते हैं, ठीक है, उसी तरह से विमेन हेल्थ के भी चार बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है। आप यू कैन सी 4 पिलर्स, 4 लाइक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आर। एक तो आपका फिजिकल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फीमेल, एंड देन उनका इमोशनल वेलबींग हमको मेक श्योर करना पड़ेगा कि वुमेन इज इमोशनली स्टेबल। अगर वो स्टेबल नहीं है इमोशनली तो फिर वो स्ट्रेस लेके आ रहे हैं दिमाग में, और उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां उनको होने लगती हैं। तो दैट इज वाई द सेकेंड इज आपका इमोशनल वेलबींग। एंड थर्ड इज द बैलेंस, उनका हार्मोनल बैलेंस, उनका वेट मैनेजमेंट, उनका खाने पीने का जो भी बैलेंस है, एवरीथिंग, ये भी हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि दिस हैज बीन टेकन केयर फ्रॉम द फैमिली एंड एवरीवन। फीमेल को ये खुद भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अपना उनका जो है बैलेंस, एक संतुलन बना के चले। एंड द फोर्थ एंड लास्ट इज इनर पीस। तो ये चारों अगर एक नारी के पास अगर ये चारों शक्तियां हैं और वो उसको इस्तेमाल कर रही है ठीक से, तो एक उनकी हेल्थफुलनेस रहती है हमेशा। जबकि अगर आप ये सब मेंटेन नहीं कर रहे हैं किसी भी फीमेल में, तो क्या है, बैलेंसेस बिगड़ रहे हैं। तो सबसे पहले उनका इनर पीस खो रहा है, हार्मोन डिसबैलेंस हो रहे हैं, उनका हेल्थ एंड हाइजीन उनको नहीं पता है। तो ये सबसे एक चक्रव्यूह सा उनके लाइफ में बन जाता है, जिससे वो नहीं निकल पाती हैं और बहुत सारी बीमारियों को वो घेर लेती हैं। और ये सब के लिए बहुत जरूरी है अवेयरनेस। अगर अवेयरनेस उनके अंदर है तो वो इन सब चीजों को कर सकती हैं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे हमें बहुत जरूरत है कि टू ब्रिंग दिस अवेयरनेस इन द फीमेल, जहाँ भी हैं महिलाएं, नॉट ओनली इन इंडिया, हर जगह अगर हम ये बात अगर पहुंचा सके कि क्यों फीमेल स्ट्रेंथ की, हेल्थ की, हाइजीन की हमें जरूरत है। तो जैसे एग्जांपल्स बहुत सारे, डेली हाइजीन जो है फीमेल की जो हैबिट्स में होता है, बट बहुत डीप में उनको पता नहीं होता है, वो नहीं कर पाते हैं। तो डेली हाइजीन हैबिट्स उनके लिए हम लेके आएंगे, उनको बताएंगे कि वाई डेली हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उनको किस तरह से अपना जो है कि ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि
फीमेल अपने आप को सबके लिए समर्पित कर सकते हैं, लेकिन खुद का ध्यान रखने में शायद वो बहुत पीछे रह जाते हैं। और टाइम टू टाइम फैमिली के लिए करना है, बच्चों के लिए करना है, स्पाउस के लिए करना है, सीनियर्स के लिए करना है, घर में सबके लिए करना है, बट शायद खुद को ध्यान देना वो भूल जाते हैं। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक देम अवेयर अबाउट द जनरल हाइजीन थिंग्स, जिसमें कि उनका डेली क्लीनिनेस से रिलेटेड उनका पीएच बैलेंस मेंटेन रहे बॉडी के अंदर, और उनका जो है कि इवन सैनिटरी नैपकिन को लेके जो अवेयरनेस नहीं है फीमेल में, वो सब उनको बताया जाना चाहिए। एंड यूज टू कॉटन थिंग्स मोस्ट ऑफ द टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। अगर महिलाएं ज्यादातर कॉटन इस्तेमाल करें, सूती वस्त्र इस्तेमाल करें, कॉटन क्लोथ इस्तेमाल करें, तो उनके लिए वो बहुत अच्छा है। तो इसी तरह से उनकी जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ है, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग आज भी शेयर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे मैं कहना चाहूंगी कि दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस, दैट फीमेल डज नॉट वांट टू डिस्कस दिस, बट ये होना चाहिए उनको अवेयरनेस लेके आने के लिए कि उनकी जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ है, उनका जो अपना ट्रैक साइकिल ऐप वगैरह होता है, वो उनको जानकारी दी जानी चाहिए कि मंथली जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है उसको वो अपना ध्यान दे सकें, क्योंकि अगर उन्हें जानकारी होगी वो तभी ध्यान सकें। सेकेंडली, जो इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है या पेन किलर के बारे में अवेयरनेस नहीं है, वो बस पेन किलर्स खा लेते हैं जस्ट बिकॉज कि फैमिली सफर ना करे, तो उनको टीच कराया जाना चाहिए। इवन इसके लिए अलग अलग वर्कशॉप होनी चाहिए कि घर में ही बहुत सारे नेचुरल ऐसे पेन किलर्स अवेलेबल हैं जो विदाउट मेडिसिन आपको ठीक रख सकते हैं, जैसे कि अजवाइन पानी होता है, हॉट वाटर बैग है, और डिटॉक्स वाटर है, बहुत सारे। अगर हम एक लिस्ट बना दें कि ये आपको उन दिनों में लेना है, तो फीमेल्स जो है कि एटलीस्ट स्टॉप यूजिंग मेडिसिन, दवाई खाना छोड़ के वो इस प्रकार से अपना ध्यान रख सकेंगी। और जो मेंस्ट्रुएशन में आजकल प्रोडक्ट भी यूज होते हैं, उसकी भी अवेयरनेस उनको दी जानी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो चुकी है। और अभी वेस्टेज मटेरियल को ना यूज करते हुए अभी बहुत सारा ऐसा है कि बहुत सारे संसाधन मौजूद हैं जो फीमेल को यूज करना चाहिए। दूसरा है, the most important thing which we always forget as a female is nutrition and hormones. हम अपने न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं देते हैं, जो बचा कुचा है लास्ट में खाएंगे। मोस्ट ऑफ द वीमेन इन इंडिया, मैं नहीं कह रही हूँ कि सब लोग, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक दैट कि लास्ट में खाएंगे, चलो कंप्रोमाइज कर लेते हैं, फैमिली ने खा लिया, हमारा जो बचेगा हम खा लेंगे। तो उनको एक रेगुलर फूड चार्ट बनाना पड़ेगा, एक फूड मैप बनाना पड़ेगा, सो दैट वो खा सके उन चीजों को एक चार्ट के हिसाब से, और अपना ध्यान वो रख सके, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन ही परिवार को, घर को सुंदर अच्छा रख सकता है, स्वस्थ रख सकता है। अगर आपकी नींव ही कमजोर है, तो बड़ी साधारण सी बात है कि अगर नींव ही कमजोर है तो फिर आपका घर मजबूत कैसे होगा। तो इसलिए महिलाओं को बहुत जरूरी है कि आपका खुद का ध्यान दे वो, और अपना वाटर इनटेक, अपना जो खाने पीने का संतुलन है वो जरूर बना के रखें। उसके लिए भी अलग से एक छोटा मोटा वर्कशॉप होना चाहिए ऑन द रेगुलर बेसिस, दैट वो किस तरह से खाएं, बैलेंस क्या हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल्स आर हैविंग प्रॉब्लम विद हीमोग्लोबिन, उनका हीमोग्लोबिन हमेशा कम आ रहा है। एंड विटामिन डी इज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम, विटामिन बी 12 अच्छा नहीं है, और शुगर बढ़ रही है, जबकि वो घर में काम भी कर रहे हैं, वो मोटे भी नहीं है, बट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस एंड अनहेल्दी हैबिट्स क्या हो रहा है कि वो डे बाय डे वीक होते जा रहे हैं और अपना ध्यान वो नहीं रख रहे हैं। तो अपना डेली डाइट एक टिप होना चाहिए, डेली डाइट बॉक्स होना चाहिए, एक चार्ट बना के रखें, सो दैट एक उस पर टिक लगाते जाए कि आज हमें ये खाना है, या डेली बेसिस पे हमें ये सब चीजों को खाना है। और अगला है फिटनेस। फिटनेस और स्ट्रेस रिलीफ इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप फिट नहीं हो, तो सेम गोज विद द सेम थिंग, लाइक अगर आप फिट नहीं हो तो ऑफ कोर्स आप दूसरों का ध्यान नहीं रख सकते हो, स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा योगा अपनाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जितनी भी फीमेल आज इस प्लेटफॉर्म पे हैं, अगर वो करती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करते हैं तो उनको चाहिए कि प्रतिदिन थोड़ा सा समय स्वयं के लिए निकालें। मी माई सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 24 घंटे में अगर 40-45 मिनट आपके पास नहीं है खुद को देने के लिए, तो दैट इज अ वेरी रॉन्ग
एटीट्यूड टुवर्ड्स योर बॉडी। आप अपने बॉडी का, जो कि स्वयं एक मंदिर के समान है, उसका सम्मान नहीं कर पा रहे हो, अगर इतना भी समय आपके पास नहीं है, तो लेडीज अपने लिए टाइम निकालें, कम से कम 40-45 मिनट थोड़ा सा योगा अभ्यास करें। आज तो बहुत ही सरल हो चुका है, आपको हर जगह मिल रहा है योगा अभ्यास करने को, तो थोड़ा सा योगा अभ्यास के लिए टाइम निकालें और थोड़ा सा वॉक जरूर करें, और खुद की चीजों के बारे में विदाउट फीलिंग बैड या शाई जनरल एक लिखना शुरू करें, एक डायरी मेंटेन करें कि हाँ, हमें भी जरूरत है थोड़ा टाइम निकालने के लिए, और सोने का टाइम जरूर अपना निश्चित करें कि हमें एक सुनिश्चित टाइम पे सोना है, उठना है। तो ये आपका जो है फिटनेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। और फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको इग्नोर नहीं करनी है, जो रेड फ्लैग्स होते हैं हम इग्नोर करते जाते हैं, आदतन होता है कि नहीं नहीं बाद में फैमिली के ये चीज इंपॉर्टेंट है, नहीं नहीं बच्चे का एडमिशन जरूरी है, नहीं नहीं मेरे लॉज है उनका ट्रीटमेंट जरूरी है, हमारा नंबर कभी नहीं आ रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर अवॉइडिंग आवरसेल्व्स। तो हमें जब भी रेड फ्लैग्स आते हैं, जैसे कोई अनयूजुअल चीज आपको बॉडी में पता चल रही है, तो उसको इग्नोर मत कीजिए। गो टू द डॉक्टर्स, टॉक टू द फीमेल प्रैक्टिशनर, उनसे आप बात कीजिए। और उसके बाद अगर आपको बहुत मूड स्विंग्स हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो टॉक टू द फैमिली, टेक द हेल्प। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। तो आई वुड लाइक टू सम अप दिस इन वेरी शॉर्ट थिंग कि पहले तो आपको बनना पड़ेगा, साइलेंस को ब्रेक करना सीखे। छोटी छोटी चीजों को आप इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन उसको इग्नोर करना छोड़ के बताना सीखिए, शेयर करना सीखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब तक आप साइलेंस ब्रेक नहीं करेंगे, प्रॉब्लम्स होती रहेगी आपको। और मदर्स को, डॉटर्स को आपस में एक दूसरे को, हर महिला को दूसरी महिला को एनकरेज करना है कि ये स्ट्रेंथ है, इट्स नॉट द मैटर ऑफ शेम। ये स्ट्रेंथ की बात है कि अगर फीमेल्स हेल्दी है, हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया हमारा एक स्ट्रेंथ का विषय है, और इसको रखना है। तो अपनी फैमिली से डिस्कस करें, बातचीत करें, इंटरैक्टिव क्वेश्चन आंसर्स करें, और शर्माए नहीं, छिपाए नहीं चीजों को, बिल्कुल सामने आके अपने आप के बारे में डिस्कस करें कि यस आई एम इम्पोर्टेंट, फीमेल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीबॉडीज लाइफ। तो मेरा ये सबमिशन रहेगा कि अपना ध्यान आप जरूर रखें। तो फीमेल हेल्थ एंड हाइजीन, मेरे ख्याल से ये सब चीजें अगर आप कर पाए थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और छोटी छोटी वर्कशॉप्स होती रहे ऑल ओवर द इंडिया, तो बहुत एक अवेयरनेस आएगी, एक बहुत चेंज आएगा। तो इसी के साथ आई विल जस्ट वांट टू टेल 4 टिप्स कि एक तो पानी जरूर पिए सभी लोग। हमारा 72% ऑफ द बॉडी इज वाटर। सभी फीमेल्स को, नॉट ओनली फीमेल, एवरीबडी नीड्स वाटर, पानी जरूर पीना चाहिए। मोस्टली घर का खाना खाएं, प्लांट बेस्ड फूड खाएं, जो उग सकता है नेचुरली वही खाएं। और फोन को थोड़ा रात को डिटैच करें, खुद को 1-2 घंटा पहले सोने से पहले फोन को दूर रख दें। और ये सब चीजें अगर आप छोटी छोटी चीजें को अपने डेली हैबिट्स में लेके आओगे, तो यू विल फील द चेंज की जो टाइम हम फालतू में रील्स देखने में यूट्यूब में लगा रहे हैं, उससे अच्छा 1 घंटा, एक आज एक प्रण ले लें कि आज से 1 घंटा टाइम हमारा हमारे लिए होगा, नो इंटरप्शंस फ्रॉम एनीबडी। हम उसमें अपना योगा, अपना ब्रीदिंग प्रैक्टिस सब कुछ करेंगे। तो इफ वी विल start thinking like that, then only we can bring the change in the community, in the society, and only a female can help the other female. तो जैसे ही एक दूसरे की मदद करना आप शुरू करेंगे और इस तरह से अवेयरनेस लेके आएंगे, आप पाएंगे चेंजेस आर हैपनिंग। और दिस इज रियली वेरी गुड कि जब आप प्रण कर लो, और आज से अच्छा कोई दिन नहीं होगा इस चीज को प्रण करने का, एक पॉजिटिव वो लेने का नोट कि नहीं, आज से शुरू करना है हमें 23 घंटे समाज के प्रति, परिवार के प्रति, सबके प्रति रखना है, लेकिन 1 घंटा हमारा हमारे पास हमारे लिए होगा, और हम अपना ध्यान रखेंगे। So that's all for today. I hope you all will understand this urgency of health and hygiene. और मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे आपने बुलाया यहाँ पे। And I wish you all a very happy, healthy life today onwards. So thank you, Mr. Ghosh, and thank you everyone for inviting me here. धन्यवाद. Thank you very much, ma'am. Thank you very much,
Okay. So it was very insightful talk, and also a time to rethink about women's health, women who are working day and night in our family. And not only women, it's our duty also as men. I'm very much thankful to Shastrik, and um, Yes. I also take pride that as a men-oriented trust organization, we don't have any female member till now. It's not in the core team, but we could actually think about the symposium on women health. So that's a great pride from Shastriks also, but it's not only the thing to take to be proud about, but also to take some steps towards the actual practical life where we can make some change with the tips of um, Madam. Thank you, Vineeta ji. Our next speaker is Miss Mamta Bist, who is also a faculty and senior yoga teacher at GS College of Yoga and Cultural Synthesis. Her background in theater, radio, and Indian classical dance, namely Kathak, enriches her understanding and expression of yoga's philosophy and practice, mainly in the women's health. Madam, now you can start. Namaste. Thank you, Buddhadev ji. Malay. Madam, I think you are not audible. Or yes, Am yes, I you are now? audible. Sorry. Am I audible? Yeah. Okay. So yes, Buddhadev ji, thank you so much, Malay, Supriya, and the rest of the Shastrik team. And I also congratulate and say hello to Miss Vineeta ji and the rest of the team who's going to be speaking on this stage. So I come from Kavaladham tradition. We have a campus in Lonavala, and since it's an international yoga international day today, so we just thought that it's very important that we bring some more elements of yoga on the table other than just pranayam and asana practices. So योग प्रैक्टिसेस की तरफ जाने से पहले भी हम एक और बात कहना चाहते हैं कि हमारा आज का टॉपिक है वुमेन्स हेल्थ, और वुमेन्स हेल्थ का आज के टाइम में मुझे लगता है सबसे बड़ा क्राइसिस ये है कि हम, जैसे विनीता जी ने राइटली कहा, हम अपने आप को एक सेगमेंटेड फेजेस में देखते हैं कि मेरी तबीयत मतलब मैं सिर्फ मोटी हूँ, बाकी सब मुझ में अच्छा है, या मेरे बाल झड़ रहे हैं, बाकी सब मुझ में अच्छा है, या मेरे हार्मोनल इम्बैलेंस हो गए पर बाकी सब मुझ में अच्छा है, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है पर बाकी सब मुझ में अच्छा है. सो वी ऑलवेज सी आवरसेल्व्स फ्रैगमेंटेड. But if we follow the yogic philosophy talks about us human being as a united holistic being, है ना. तो इसके लिए क्या है कि अभी जो हम आजकल क्या कर रहे हैं, हम साइकोसोमैटिक जो सिम्टम्स हैं हम उन्हीं को ट्रीट करने के लिए इनकरेज हो रहे हैं. Actually, it will be very nice if people who can keep their cameras on, if they can keep their cameras on, because it makes me comfortable that मैं किन से बात कर रही हूँ. तो if it's possible, otherwise I totally understand. So हम आज के इस सेशन को क्या करेंगे, सबसे पहले हम एज अ वुमेन, मैं एक औरत होने से पहले भी और क्या हूँ, इस पे हम थोड़ा फोकस करना चाहेंगे. So if we take the reference to Taittiriya Upanishad or Prashnopanishad and all, they talk about us as being a holistic being. We as human being existing in 5 layers, 5 sheets. So it's starting. I think Supriya, I had given you a PPT. If you can play just keep one slide on for that, if that's doable. Yes, ma'am. Yes. So हम 5 layers में exist कर रहे हैं. सबसे पहला लेयर जो ऊपरी लेयर है, और ये सारी 5 लेयर्स ना एक के अंदर एक है. सबसे ऊपर की लेयर है अन्नमय कोश. अन्नमय कोश which is made of food. So ये जो भी फिजिकल बॉडी हम अपने देख पा रहे हैं, या इवन जो हमारी इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स है, सिस्टम्स हैं, वो सारा अन्नमय कोश का हिस्सा है. उसके अंदर आता है प्राणमय कोश. प्राणमय कोश आपका जहां पर आपका ब्रीदिंग रेगुलेट कर रहा है, और आप जितने भी फंक्शंस हमारे शरीर में चल रहे हैं, दैट इज बीइंग
पॉसिबल बिकॉज ऑफ द प्राणमय कोश। चाहे हम श्वास ले रहे हैं, चाहे हम खाना खा रहे हैं, वो डाइजेस्ट हो रहा है, ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, ये सब सर्कुलेटरी सिस्टम जो भी चल रहा है वो हमारे, हाँ, यू कैन कम टू द सेकेंड स्लाइड एंड यू कैन जस्ट पुट इट ऑन फुल स्क्रीन। तो जो हमारा सेकेंड लेयर है वो है प्राणमय कोश, एंड द थर्ड लेयर उसके भी नीचे आता है मनोमय कोश, जहां पर हमारी इच्छाएं, जहां पर हमारी चॉइसेस, हमारी हैबिट्स है। मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, मुझे ये करने में मजा आता है, मुझको ये करने में मजा नहीं आता है, मुझे आज मेरा मन है कि मैं आज एक मूवी देख लूं, या आज मेरा मन है यार चलो मैं थोड़ा और सो लेती हूँ। ये जो इच्छाएं हैं ये किस शीट में रहती है? ये आपकी मनोमय शीट में रहती है। मनोमय शीट के अंदर भी एक और शीट है जिसे हम कहते हैं विज्ञानमय शीट। विज्ञानमय शीट is your intellect, the discrimination between what is right and what is wrong, जो हमें बताता है कि I request Miss Sunita to put her thing on mute. सुनीता पांडे जी, क्या आप म्यूट पर रख सकते हैं स्क्रीन को? थैंक यू। तो अन्नमय कोश के बाद आया प्राणमय कोश, जहां पर हमारा पूरा फंक्शन कर रहा है बॉडी। फंक्शनल बॉडी के अंदर आया हमारा मनोमय बॉडी, जहां पर हमारी सारी टेम्परमेंट्स, हमारे सारे मूड स्विंग्स, हमारे सारे सेंसेस, हम क्या देख रहे हैं, हमें वो देख के कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये शीट आता है। उस शीट के अंदर भी है विज्ञानमय शीट, जिसमें हमारा इंटेलेक्ट है, जो हमें सही या गलत का आभास कराता है। अरे ये मूवी तो अच्छी है, लेकिन मुझे कल मेरा एग्जाम भी है, तो मुझे लगता है मुझे पढ़ लेना चाहिए आज। That's something, how you're deciding what is right and what is wrong is your intellect sheet. And even below the intellect sheet, the innermost sheet is the Anandamay sheet, which we are as a person. Our yogic philosophy will say Sat Chit Ananda. Eternally, essentially, we are this blissful sheet. पर क्या होता है कि बाकी शीट्स के साथ मिस आइडेंटिफाई करके हम, चाहे हम एक औरत है, चाहे हम एक आदमी है, हम अपने आप को उस ब्लिस से दूर जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उसके बेसिस पे अपने आप को गेज करने लगते हैं। नाउ व्हाई वी हैव स्पोकन अबाउट द स्टोरी ऑफ पंचकोश? बिकॉज all the diseases, all the issues that we have today with the women's health or the girls' health are based on the malfunction of these 5 sheets. तो सबसे पहले ये जो मनोमय कोश है, जैसे ही अभी मैंने कुछ देखा, मुझे अच्छा लगा या नहीं लगा, उस थिंक ने कुछ स्टिमुलेट किया, उस थॉट ने मेरे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट किया। मेरा नर्वस सिस्टम या तो फ्लाइट मोड पे चला गया या फाइट मोड पे चला गया। नर्वस सिस्टम कोलैप्स किया तो क्या हुआ? मेरी ब्रीदिंग चेंज हुई, ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हुई, मेरे हार्मोन्स ने या तो सिक्रीशन बढ़ा दिया या सिक्रीशन घटा दिया। उससे क्या हुआ? मेरा जो ऑर्गन था वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और एंड में मैं बोलती हूँ कि बहुत दिन हो गए सर, मुझे भूख नहीं लग रही है, मैं सो नहीं पा रही हूँ, या मेरे यहाँ पर एक घाव हो गया है जो हील नहीं होता है, या मेरी आंखों की रोशनी कम हो रही है। तो हम देखते हैं कि ये जो मनोमय शीट है, जो मेंटल शीट है, उसमें जैसे ही टेम्परमेंट, जैसे ही बाहरी सेंसेस से इंफॉर्मेशन आके कुछ बदलाव आते हैं, तो वो किस तरह से फिजिकल बॉडी पे मैनिफेस्ट हो जाते हैं। तो ये जो एक पूरा इक्वेशन है हमारे पंच कोशों का, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इनका इंटर रिलेशन है हमारे विमेन्स हेल्थ, डिजीजेस या फिर हेल्थ से। तो हम क्या करें? अगर आप मेरी नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो वेरी क्विकली आई हैव ट्राइड टू शो दैट व्हाट ऑल वी कैन डू इन टुडेज टाइम टू टेक केयर ऑफ आवर पंचकोशास। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ मेडिसिन जस्ट फॉर डायबिटीज, क्या मैं अपने आप को एक होलिस्टिक हेल्थ दे सकती हूँ? यस, मैं अपने आप को होलिस्टिक हेल्थ दे सकती हूँ। उसके लिए मुझे पहले अपने आप को अपने पंच कोशों के प्रति अवेयर करना चाहिए, और साथ ही ये समझना चाहिए कि मुझे सिर्फ एक कोश के लिए नहीं, अपने सारे कोशों की हेल्थ का ध्यान रखना है। एज अ औरत, एज अ लड़की, मुझे अपने सारे इन 5 शीट्स को, इन 5 कोशों को मैं कैसे नरिश करूं, इसके बारे में बात करनी चाहिए। एंड दैट इज वेयर योग प्लेज अ वेरी होलिस्टिक इंस्ट्रूमेंट। Now, talking about how do we strengthen all these 5 sheets? तो शुरुआत कर लेते हैं अन्नमय कोश से ही। और यहाँ पर हमारे योग के सिर्फ आसन या प्राणायाम नहीं, बल्कि यम और नियम, हमारे 5 यूनिवर्सल रूल्स है। अगर आप अष्टांग योग में जाएंगे तो सबसे पहले आसन प्राणायाम से पहले ही यम और नियम की बात की गई है। 5 यम है, 5 नियम है।
यम है आपके सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, और आपके नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। अब मैं इन सबकी डेफिनेशंस में एकदम डिटेल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि टुडे वी आर वेरी the technology and we can all search them, talk about them. मेरा आइडिया, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं इन टर्म्स को आपके सामने लेकर आऊं, ताकि आप अपने आप को सेल्फ एजुकेट भी कर सके। जब भी हम अपने अन्नमय कोश को स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं, जैसे कि हमको पहले भी बताया गया, थोड़ा आसन करना, थोड़ा वॉक करना, थोड़ा बॉडी में मूवमेंट रखना, डे टू डे बेसिस पर अच्छा खाना खाना, ऐसा खाना जो मुझे नरिश कर रहा हो, जंक फूड से दूर रहना, प्रोसेस फूड से दूर रहना, इस तरह से हम अपने अन्नमय कोश की सहायता कर सकते हैं। उसके बाद आया आपका मनोमय कोश। मनोमय कोश के लिए एक बहुत ही सिंपल ब्रीदिंग भी अगर आप कर लेंगे, 2 मिनट आप बैठे, आंख बंद करके बैठे, मेरी नेचुरल ब्रीदिंग ही कैसी चल रही है, सिर्फ इसी पर भी आपने ध्यान लगाया, आप देखेंगे कैसे आपका नर्वस सिस्टम अपने आप स्लो डाउन करता है, कैसे आप फ्लाइट मोड से, रिएक्टिव मोड से सिर्फ ऑब्जर्वेंट मोड पर आ सकते हैं। अपने मनोमय कोश को, जो कि बहुत ही चालाक और सबसे डेंजरस कोश है, जैसे कि मैंने बताया, मनोमय कोश में सबसे पहले योग ऑलवेज considers all diseases as psychomatic diseases, like they are the symptoms of what is going inside. अगर हमें कैंसर हुआ है, अगर हमें डायबिटीज हुआ है, तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इमोशनल मेंटल लेवल पे कुछ ऐसा हुआ है जो हमारे विरुद्ध गया है। तो इसलिए इस मनोमय कोश का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। सेंसेस का अवर्जन, हमारे यम संतोष है, तप है, स्वाध्याय है, इन मार्गों से, यानी कि जैसे कि अभी एक पहले बोला गया, अपने आप को मोबाइल से रखिए। आजकल हर रील पे हमारा ध्यान है, कौन अपने रील में कहाँ क्या कर रहा है। इवन इन योगिक फील्ड, जब भी कोई आसन प्रैक्टिस दिखा रहा है तो उसने कितने अच्छे से कारपेट बिछाया है, कितना ग्लैमराइज किया है। सो all our senses are constantly busy, occupied with what the world is doing and how I am lagging behind. तो जितना आप अपने सेंसेस को सेटल करेंगे, काम करेंगे, मनोमय कोश पर अपना एक थोड़ा सा आप अपना कैलिबर लेकर आएंगे, तो आप देखेंगे आपके बाकी शीट्स भी अपने आप सेटल होने लगे हैं। इसके लिए आप कुछ अच्छा सुनिए, कुछ अच्छा पढ़िए, जर्नल्स बनाइए, रिफ्लेक्ट कीजिए, मुझे जो लग रहा है, अपनी फीलिंग्स के प्रति सचेत हो जाइए। हमारा एक यम है सत्य। सत्य को हम यहाँ पर इस तरह से जोड़ सकते हैं कि हम आजकल अपने आप से सच ही नहीं बोलते हैं। हमें जो भी लगता है हम उसको बोल देते हैं, अरे ये तो ठीक हो जाएगा, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है। अगर हम थोड़ा देर बैठ के सोचें तो वाकई हमें पता लगेगा कि आप अभी जो ये मुझे गुस्सा आ रहा है, या मुझे ये जो चिढ़ हो रही है, या मुझे ये एक तरीके का जो लालच आ रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। अगर मैं इस पे विचार करूं तो मैं इसके कारण तक जा सकती हूँ और मैं उस कारण को रिजॉल्व कर सकती हूँ, बजाय इसके कि मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करती रहूं। इंटेलेक्ट, विज्ञान में एक शीट के लिए अच्छा सुनिए, अच्छा पढ़िए, सत्संग कीजिए, श्लोक पढ़िए, मंत्र पढ़िए, जिस भी इष्ट देवता को आप मानते हैं, जिस भी भगवान में, प्रकृति की किसी भी चीज में आपकी आस्था है, उसके प्रति सजग होइए, उसके प्रति एक समर्पण भाव लेकर आइए, सरेंडर का भाव लेकर आइए, और आप देखेंगे कि हमारा इंटेलेक्ट, यानी कि क्या अच्छा है क्या नहीं है, वो अपने आप स्ट्रेंथन हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि जब हम ऑलरेडी एक डिजीज स्टेट में है ना, हमारा इंटेलेक्ट हमें कह रहा होता है कि मुझे 10 बजे सो ही जाना चाहिए, लेकिन मन क्या कहता है, अरे नहीं यार, अभी ये एक सीरीज खत्म कर लेता हूँ, है ना, ये एक सीरीज खत्म कर लेता हूँ। आपका मन आपके इंटेलेक्ट पर हावी हो जाता है। तो जैसे जैसे आप अपने मन को सब डाउन करेंगे और अपने इंटेलेक्ट को शार्प करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको राइट डिसीजन मेकिंग अपने आप आपकी पर्सनालिटी में, आपकी डे टू डे में आ गया। एंड आनंदमय कोश को अगर आप ठीक करना चाहते हैं, तो अपने स्वरूप को जानना चाहते हैं, तो सरेंडर 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 टू दैट डिविनिटी। किसी भी काम के लिए सिर्फ कर्ता मात्र का भाव, आई एम डूइंग इट बिकॉज इट हैज टू बी डन थ्रू मी। अब इससे चाहे मुझे सक्सेस मिले, चाहे मुझे फेलियर मिले, चाहे मुझे रिकग्निशन मिले ना मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम इस तरह के संतोष के भाव को हम अपने अंदर इनकलकेट कर लें, तो हम कई सारी साइकोसोमैटिक डिजीजेस से अपने आप को बचा सकते हैं। एंड एज अ वुमेन, अगेन आई एम सेइंग, बिकॉज like the person before me rightly said, we take a lot of pressure on ourselves to be good, to be nice,
है ना, एंड ऑलवेज ट्राइंग टू कीप आवरसेल्व्स एज सेकंड। लेकिन अगर आप योग के यम और नियमों का पालन करते जाएंगे, पंच कोशों पर अपनी अवेयरनेस को और इंक्रीज करते जाएंगे, उनकी इंप्रूवमेंट पे काम करते जाएंगे, तो आप अपने आप को एक होलिस्टिक बीइंग पाएंगे, एक ऐसा होलिस्टिक बीइंग जो अपनी मदद के साथ साथ दूसरों की भी मदद और अच्छे से कर पा रहा है। So thank you so much. I think from this entire session, this entire session, I want you to take only 2 terms around Panchakosha or Yamas and Niyamas of Yoga. और उन पर आप थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कीजिए। Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much, madam. And we actually saw how the good teacher can reflect his or her knowledge when time comes. And it was not only an insightful session, it was also go back to our Yoga Sutra, actually the yogic structure of our existence. And now we would like to move towards our next speaker. Our next speaker is Rosaline Samanta, who is also an associate professor at Usha Martin University in the Department of Pharmacy. She is a dedicated researcher with significant work on contemporary health challenges faced by women. Okay, so let's get back to another insightful session. Madam. You are mute, ma'am. Please unmute yourself. Namaste. Good afternoon to all. Myself, Dr. Rosaline Samanta, Associate Professor, Vice Principal, Department of Pharmacy, Usha Martin University. First of all, I'd like to thanks to the organizing team and the resource person, Vineeta ji, as well as Mamta ji, for their insightful session. यहाँ पे उपस्थित सभी को इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का बहुत सारा बधाई। आई थिंक आई एम द ओनली रिसर्च पर्सन who is belong to different profession, that is pharmacy. Still, it is an honor to stand before you today on the occasion of International Yoga Day that became a global celebration of a timeless tradition that connects the body, mind, and spirit. I am a pharmacy professional, so I have witnessed the role of modern medicine in saving lives. But today, I'm grateful that I got this opportunity to emphasize the synergy between the pharmaceutical science and the ancient wellness system like yoga, especially in the prevention of chronic disease such as breast cancer and other lifestyle related disorders. So when the topic of this webinar is women health, yoga for women health, and when I saw the topics, I found that the topic that relevant to my field is yoga for prevention of breast cancer. I spent 5 to 6 hours in my research in that particular field. So let me begin with the hard truth. Breast cancer. It is the most common cancer nowadays in worldwide. So according to the WHO, nearly 1 in 8 women will be diagnosed with breast cancer in their lifetime. So what are the reasons? Because in this current scenario, we are hearing every day we are getting this news. One is suffering from breast cancer, diagnosed with breast cancer. So what are the reasons? So genetics play a major role, no doubt. But before to that, age, obviously after menopause, generally the women are getting menopause after their 40s. So after the menopause, it became the high chance for the breast cancer. And also 70 to 80% of the breast cancer cases are influenced by lifestyle factor. Yes,
We cannot deny the family history. We cannot deny the sex, age, and genetic. But also, we will agree that 7 to 80% reasons of the breast cancer cases nowadays are influenced by lifestyle factors. So, what are those lifestyle factors? Physical inactivity, obesity, stress, poor diet, and exposure to toxins. So, here, this is where the yoga steps in. Because I am a pharmacist, I believe in modern medicine always. I studied about medicine starting from its formulation to its export, manufacturing, etc. But yoga, it is came as not an alternative, but as a powerful complementary preventive tool. So yoga is what we believe. What we believe that yoga is not just about flexibility or fitness. It is not about the stay fit only, but it is a science of life. It addresses the root cause of many diseases. Example, that yoga regular, if you practice yoga regularly, it can reduce your chronic inflammation. And the topic, as my topic, the session, I am just delivering the yoga and prevention of breast cancer. So if you will see, the main reason of breast cancer in women are the hormonal imbalance. And what are the hormones? Majorly the progesterone and estrogen. So yoga also can address to this hormonal imbalance also, as well as oxidative stress and mental illness. So for hormonal, to manage your hormonal balance and also detoxification, certain yogic postures stimulate the lymphatic system also, and it supports the detoxification. So yoga helps maintain healthy estrogen level, and that is the key point in breast cancer prevention. If your estrogen and progesterone levels are in normal now, so you are in a safe zone. But what happens after menopause, after crossing the 40 age of 40, this estrogen and progesterone levels used to generally fluctuate. So there are some yogic posture. For example, Ardha Machandrasan, that is called spinal twist, Bhujangasan, cobra pose, Setu Bandhanasan, that is breeze pose. So these poses, what they do, they promote blood flow to the breast region and reduce stagnation of lines. Similarly, obesity. Coming to the point, obesity is a major risk factor for breast and other cancer. Yoga, when you practice yoga regularly, it increases metabolism, improve digestion, and adds sustainable weight management also without side effects. So for a effective weight management, you can do Surya Namaskar, boat pose, that is I think called Naukasan, Kapalbhati Pranayam. These things you can do. Then stress. So nowadays everyone is overstressed. यू कैन अकाउंट, आप एक वर्किंग लेडी को एग्जांपल ले लीजिए जो 9 to 5 ऑफिस में जॉब करती है, या फिर आप एक हाउसवाइफ को भी ले लीजिए. स्ट्रेस आजकल सब इससे ओवर स्ट्रेस हो चुके हैं नाउ करंट सिनेरियो. सो दीज क्रोनिक स्ट्रेस ना लीड्स टू यू इन्फ्लामेशन, weaker, that can weak your immunity, that can imbalance your hormone also. So what yoga does, the yoga calms the nervous system, reduce cortisol. Cortisol is a stress hormone that is enhance your stress level. So by doing yoga, you can reduce the stress level also. So some recommended practice for these things to reduce the stress. You can do Anulam Vilom, you can do Yoga Nidra, and every day you make practice of doing at least meditation for 5 minutes. Start from short span of time. You can increase it gradually. Meditation everybody should do. Now coming to the, in case of cancer, what is? This is the abnormal growth. What is cancer? These are the abnormal growth of the cell. Abnormal, uncoordinated, untimely growth of the cell. So that is the inflammation. So there are now specialized cells present inside our body that is called natural killer cells. What cells these cells do? These cells generally act as a defense system against abnormal and cancerous cells. So by doing yoga, they can enhance the activity of these natural killer cells. For getting this benefit of this natural killer cell, you can do some type of yoga. For example, Dikshasana,
that is called tree pose, Trikonasana, triangle pose. You can do also Brahmari Pranayama. These types of yoga posture we can adopt. Then these are about the cancer, but apart from the cancer, there is also yoga for effective and preventing and managing. There are many chronic diseases. For example, diabetes, hypertension, cardiovascular diseases, polycystic ovarian syndrome, that is called, many women are nowadays facing this type of problems, PCOD. We call it PCOD in medical talk, we call it PCOD, and anxiety and depression also. Apart from these, your yoga improves medications, adherence, enhance quality of life, and reduces healthcare burden also. So coming to the, I am as a pharmacy professional, we generally focus on medication, but also we bear the responsibility for promoting preventive care. एक बात कहते हैं ना, prevention is better than cure. So today the healthcare model is shifting from sick care to wellness care. So yoga and Ayurveda are being integrated into clinical protocols. So nowadays what we are doing, we are integrating yoga and Ayurveda. And they are becoming the clinical protocols and community health programs across the world. So let us envision a future where patients are educated about yoga as part of the disease prevention. Being I belong to a medical professional. So what I wish that every patient who's are coming to a hospital, clinics, so they should be educated about the yoga. That is a part of a disease prevention. I am not assuring you, I cannot tell you that yoga will completely cure, but definitely it will prevent. Yoga is prescribed alongside the medication for chronic disease. It should be done. So yoga becomes the parts of your life. So at last, I can say yoga is not just a practice. It is a way of life that empowers us to take charge of our health. So breast cancer and many chronic diseases are not just treatable, but often preventable when we act early, live mindfully, and move consciously. तो ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर कोई भी क्रोनिक डिजीज ये ठीक नहीं हो सकता है. If we detect it early, if you take the preventive measures, then it should be curable. So let us, as pharmacy professional, advocate for integrative health, where yoga, diet, medicine, and education, the four pillars. You can yoga, diet, medicine, and education work hand in hand. Let us not wait for illness to strike. Let us make yoga a part of daily life and a pillar of preventive care. So thank you. Wishing you all a healthy body, a peaceful mind, and a purposeful life. Happy International Yoga Day, and thank you to the organizing team for inviting me to this platform, giving me this opportunity. I'm really thankful to all of you. Thank you very much, Rosalini ji. I'm sorry if I'm mispronouncing your name. It was also some another insightful session where we got some interdisciplinary insight. She is working some modern day problem. I'm not saying that it was not there in our yoga in our ancient period. It might have been, but this is some emerging problem where also our we should talk about. We should have some discussion. Thank you, Rajolini ji, for your insight on that. Okay, so we would like to go towards our technical session. I would be very happy if Mamta ji would like to chair the technical session of ours. We have 6 papers. If she, Mamta ji, will you be able to do that? I'm sorry, that's a very like on-the-go request. I'm not really knowing what exactly I have to be doing, and also want to leave in some time because after a technical session. If you could
Can I just speak to the team once? Sir, I Yes, think you're mute. Yes. um, I would like to inform every participant to be ready so that we can start on time, and also keep your presentation very short as 10 minutes. It should not be more than that because we have to accommodate everyone. Okay. So, as I got informed by the Shastrik team, we would just start our technical session with our first presenter, Sebika Nag. If you are here, please start your presentation and also finish in between 10 minutes. Thank you. Thank you. Am I audible? Am I audible, sir? Yes, you are. Um, Yes, you are audible. Thank you for this opportunity. I felt really honored, and my paper title is Yoga: A Path to Harmony, Empowering Women in Health, Home, and Career. Actually, yoga is a powerful practice that supports women's health across physical, mental, and emotional dimensions, while also addressing the challenges we face in their social, domestic, and professional lives. And nowadays, women often juggle multiple roles, leading to stress, fatigue, and health issues such as hormonal imbalances, which the invited speakers, respectful speakers, said. Um and Their anxiety. Regular yoga practice helps in managing these concerns by improving flexibility, strength, and overall vitality. In the domestic sphere, actually, uh, we aim to explore this topic, this paper, the aforementioned issues through the lens of the Yoga Sutra and selected minor Upanishads, analyzing their teachings on women's health and well-being. And this article seeks to interpret these ancient texts, which also important, and a beautiful communication even through nowadays, to understand their relevance in addressing the physical, mental, and emotional challenges faced by women and in their social, domestic, and professional lives. Uh, where in this article, the phases is there are some points: yoga and women's physical health, understanding the female body through the lens of yoga. In the Yoga Sutra, there asanam, yoga is a posture, and the text say asana means sthira sukham asanam, and the posture should be steady and comfortable. Uh, this aphorism is the cornerstone of yogic practice and
for physical well-being, and the goal of asana is not only the muscular fitness or any other, but the removal of physical tension and the creation of an energy conserving, health promoting of the body state. And the menstrual health and yoga also there. Many women suffer the PCOS, PCOD, and there is recycling bound angle pose, Shupta Vadhyakasana, and Vadhyakasana, Poblar pose, opens i- if there and the Ma'am, sorry to interrupt you. Can you just please adjust your camera a bit? It captures only the upper part. okay. Yeah. Now it's fine. Please go on. Please continue. Is it okay, sir? Yes, ma'am. It's fine. Perfect. Please continue. Please go on. And the chronic illness and lifestyle disorders, modern sedentary lifestyles combined with multitasking pressure have led many women to face chronic conditions such as diabetes, hypertension, thyroid disorder, and obesity. Yoga addresses the root of these disorders by regulating metabolism, reducing stress, and encouraging physical activity without overexertion. Then Surya Namaskar and Matsyasana, Ardha Matsendrasana uh, is are helpful in these cases. And the philosophical integration is in Yoga Tattva Upanishad. It is said that the body is described not as an obstacle but as a sacred vehicle, which is a sadhana yantra for self-realization. It emphasizes the alignment of the prana, which is vital energy, and the manas, the mind, to maintain health. And physical ailments in this view are imbalances in the flow of energy, which can be corrected through disciplined yogic living. And this integrative understanding allows women not only to treat symptoms but to reconnect with their bodies as sources of strength, intuition, and transformation also. And the second point is yoga and emotional mental wellness, cultivating inner balance for women. In the yogic understanding of mind, in the Yoga Sutra, Patanjali begins a foundational definition, that is Yogash Chitta Vritti Nirodha. And this sutra captures the very essence of emotional wellness, whereas mind or chitta is continuously starred by thoughts, memories, desires, fears, etc., etc. And these vrittis or modifications create emotional turbulence. Yoga does not suppress them but gradually brings them under control through the discipline, which is terminology is abhyasa, and non-attachment, which is vairagya. Uh, Henceforth, we can see the pranayama or breath and emotional regulations, which is nadi, which is important to nadi shodhana, vramari, shitali, etc., etc. Due to time constraint, I just mention the points. And meditation, which is dhyana and self-awareness, which is grazing meditation, improves the concentration and relieves mental restlessness. And Shandila Upanishad states in this cases, the mind becomes pure by constant meditation, and with purity comes peace. The ancient In this ancient guide, suppose the
therapeutic power of mindfulness, a concept now validated by modern neuroscience also. And the asanas is important for the emotional resilience, which is balasana, setu bandhasana, vipratikarani, etc. In this article, a few case studies also there, and the cultivating positive emotions through the Yoga Sutra Patanjali, where Patanjali prescribes a simple yet profound practice to mental harmony, which is Maitri, Karuna, Mudita, Peksha, Sukha, Dukha, Punya, Apunya, Vishaya Bhavanatas Chitta Prasadanam, which is in Yoga Sutra 133. And the emotional community and Yoga Sangha, the scriptural affirmation of inner self, yoga's emotional empowerment, which is more important in this part. The third point is yoga at home, in enhancing our domestic harmony, which is we can say in many cultures, we can see the women are the primary caregivers. They manage child care, elder care, meal preparation, education, etc., etc., and emotionally upkeep of the family. This emotional labor, I mind it, this emotional labor is often unrecognized and unrelenting. As a result, women frequently experience the mental fatigue and burnout, disrupted sleep patterns, feelings of being overwhelmed or isolated. Yoga, especially when practiced in the home setting, brings about an internal shift that reflects in the external harmony also. And the restorative practices to rejuvenate the body and mind, which I previously mentioned, balasana, suktavadha, konasana, bipratikarni, etc., etc., which is also regulate our inner self Madam, practices, which is uh, okay. uh, Madam, I Uh, think you are out of time, so you can just conclude the whole thing. okay. I just conclude. And the fourth point is yoga in the workplace, which is professional empowerment. Here we see that Tratakasana and Matsendrasana, uh, the chair, we build physical stamina for sedentary roles. Our desk jobs are often cause neck, back, and eye strain. Simple stretches like Ardha Matsendrasana and Tadasana and chair supported wind relieving help releases tension and our vitality throughout the day. And the fifth point is yoga as a social connector. uh, Here it is said that group yoga sessions and women's circle, intergenerational healing, and community-based well-being initiatives, and empathy and inclusiveness, which is Maitri Bhavana, etc., etc. In these cases, Hamsa Upanishad portrays the liberated soul as one who moves freely yet compassionately among people. Likewise, yoga empowers women to engage socially with Madam, confidence and empathy while maintaining inner composure. Uh, Thank you. Here are more some points, which is scriptural insights and women in yoga, and the integrating yoga into daily life. Because the time is, I thank you all. thank you very much. So, I would like to invite Mr. Snehal Amol Junarkar. Please pardon if I am mispronouncing the name.
It's Snehal Amol Junnarkar. Uh, I'm Okay. female. Sorry, sorry. Yeah, sorry. Okay. Okay. Um, Please start, madam. And am also, I audible? yes, yes, you are. Yes. Good evening, all. My name is Snehal Junnarkar. I'm going to present on importance of yoga nidra in managing work-life balance. My flow of presentation will be introduction, why yoga nidra is important for work-life balance, uh, then research methodology, case I have done case study, and findings are will be presented. Uh, Currently, we see the human needs are just focused only on the physical needs, but the social, emotional, mental, and spiritual needs are mostly not taken care of in achieving the goals and career options. So, while doing that, we mostly get work-life imbalance. Work-life imbalance means the demand from work and family are more than the one person can contribute to both the areas. That creates stress basically, and mainly impact the sound sleep. Mostly we see many of us are earning much more, but sleep is something which we can't earn by money, and that causes physical problems like type 2 diabetes and work life imbalances. So the yogas, ashtanga yoga given by Patanjali and Swami Satyananda Saraswati in Yoga Nidra book, Yam, Niyam, Asana, Pratyahara, Dhyan, Dharana, and Samadhi are 8 limbs of yoga, out of which Pratyahara uh, includes Yoga Nidra, means detaching ourselves from our senses, and how it will work for our handling our stress or work life balance will be discussed in whole the presentation. As per International Diabetic Federation, one of the 4 people in the world are diabetic, and 101, that is more than 100 million people of India are diabetic, and 136 million people are pre-diabetic, out of which 90% are stress-based, stress-induced diabetic persons with between working and out of within this population, the 90% are contributed by the type 2 diabetes are due to socio-economic, demographic, environmental, and genetic factors like urbanization, work-life imbalance. Means how much work-life balance is important in life, because nowadays we don't want to live, but we don't want to compromise in our career. That's the stage we get, and females are mostly more influenced by this situation. So the work life balance as well as the factors influencing work life balance are studied in a limited way with respect to sleep, connecting the work life balance with the sleep. So my research objectives are to study and understand the effects of yoga nidra on restoring sleep, how it can restore sleep, as well as manage work-life balance, especially in the women after marriage, after baby birth, how they can handle sound sleep to get more effective work both at family level as well as work level. To identify various factors influencing yoga nidra practice on managing work-life balance is my second objective of study. The research methodology was literature review we have done, and to understand causes of work-life imbalances, and then we have done a case study. The case was selected by a research
a case of a researcher at Institute of National Importance from set of Maharashtra was selected. Practice of rational was the candidate should be um, doing yoga nidra for more than 5 years, having some health issues prior to yoga nidra and controlled after yoga nidra practice, and able to establish his work-life balance after with the help of yoga nidra. So the case was like the researcher was very good at his academic, as well as her ambitions was to go for postdoctoral studies out of in a designated foreign university. But with work and after marriage and baby's birth, the breakout situation in work balance, came, which totally reversed her effectivity at her work or a research or publication level, with some attachment to yoga practices. Her mentor at yoga suggested her to get in yoga nidra practice. After first yoga nidra practice, she was able to understand her physical as well as mental, spiritual, and social needs. And with the few years of practice, after 3 years, she was able to represent her or effectively express her thoughts, which previously she was fearing of, was discovered. And after 5 years of yoga nidra, she understood that with the help of yoga nidra, she was able to understand her feelings, express it effectively, as well as execute it effectively. The creativity she was lost during her stress breakouts with her supervisor's death, sudden her baby's death, suggested by her doctor in second month of her PhD. All these memories of stress breakout, she was able to recover. So that was the effect of yoga nidra she understood. Further, at physical level, she was diagnosed with the um, type 2 diabetes. Thus, I have given a reference of type 2 diabetes in India. She was she was diagnosed with type 2 diabetes, and within with only yoga nidra practice without any medicine, she was able to recover from the type 2 diabetes. Further, she was able to handle her mental stress out, depression, um, her excessive ambitions or desires to achieve one more paper or one international accreditation, or mm, to be all the levels cause anger, anxiety, stress disorders, everything which was gradually Please reduced with yoga conclude. nidra. Please conclude. And with the conclusion note, I would like to say that work-life balance was a complex process which can be handled with yoga nidra effectively. Women especially should do yoga nidra daily. It's a 30 minutes practice, but it will give you physical, mental, emotional, as well as spiritual understanding of yourself, as well as your workplace, both the way you can handle yourself. That's the only message I would like to give with my research. Thank you. Thank you very much, Nehal ji. I'd like to request Nima Sarkar ji. Thank you. Yes, sir. I'm just sharing my PPT first of all.
Sir, I'm visible. Yeah. Hello, sir. Thank you, sir. My name is Nimai Sharkar. I'm a PhD research scholar from Tripura University. We'll come to the point. My topic is the role of yoga in the daily lives of women and girls, a philosophical perspective from ancient India. Introduction. Yoga derives from the Sanskrit root yug, use, meaning to unite, is more than physical exercise, a spiritual and philosophical path rooted in ancient India thought. From Vedic hymens to Patanjali's Yoga Sutras, yoga has been regarded as a way to attain moksha, means liberation, and inner harmony. In these traditions, yoga was not confined to monks or male ascetics. Women also played a vital role in practicing and transmitting yogic wisdom. Their lives were guided by yogic principles integrating spirituality with household duties. My next slide is philosophical foundation of yoga in ancient India. Yoga's origins lies in the Vedas and Upanishads, especially the Shatasattva Upanishad, which explore breath control and meditation. The Bhagavad Gita present karma, bhakti, and jnana yoga as path to liberation. Patanjali's Yoga Sutra later formalized the eight limb of yoga. In Shankar Yoga philosophy, the balance of Purusha and Prakriti, often associated with the feminine, symbolize yoga's aim to harmonize body, mind, and cosmic forces. Women in Vedic and yogic traditions. In the Vedic period, women like Lopamudra, Gargi, and Maitreyi actively engaged in spiritual learning and yogic inquiry, known as Brahmadinis. They studied and taught the Vedas. Their hymens and debates reflect deep philosophical insight, showcasing a time when women were respected as intellectual and spiritual contribution in ancient India. Yoga practices in the daily lives of women. For women in ancient India, yoga was woven into daily life. Ethical principles like ahimsa, sattva, and socha guided behavior, while pranayama and meditation features in daily ritual. Though formal asanas developed later, mindful performance of chores such as grinding and cooking mirrored meditatively practices, reflecting yoga's practical integrations. Yoga and inner empowerment. Yoga empowerment empowered women by fostering Atmajnana, self knowledge, offering a path beyond caste or gender limits. Figures like Gargi, who debated male scholars, showed how yoga nurtures intellectual and spiritual independence. Yoga's view of the soul's unity with Brahmana affirmed spiritual equality. Another slide is the household as a yogic space. Yogic space. For women, fulfilling duties with detachment in aligned with the Bhagavad Gita's teachings of Nishkama Karma, homes became spiritual spaces through ritual, fasting, and mindful living. Even menstruations of menstruation open schedule was seen by some as a time for inner reflection. Education, transmission, and mentorship. Yoga and its knowledge systems were traditionally passed orally within families and communities, while formal gurukuls were male dominated. Many women received spiritual education at home, guided by mothers and grandmothers
who shared stories, prayers, and meditative practices. Although texts like the Manusmriti later sought to limit women's access to knowledge, earlier traditional were more inclusive. Female saints such as Andal, Mirabai, and Akka Mahadevi bridged devotion and yogic renunciations, keeping spiritual rules alive for women. Yes, sir. I take only 1 minute for conclude. Though poetry, music, and leaderships they upheld, and revitalized the ancient integration of yoga into everyday life. Yoga symbolized Yoga symbolized and feminine principle. Yoga in Tantra Yoga, the feminine principle is revered as the dynamic force of the universe. Goddess like Durga, Kali, and Saraswati symbolize wisdom, power, and transmissions. Uh, Kundalini Yoga focuses on waking this Shakti energy at the spine base, rising through chakras to unite with Shiva, representing pure consciousness. Women are women are seen as practitioners and inherently connected to this creative, transformating, energizing embody the enhance of yogic spirituality. Last slide, and then conclusion. Okay, continuity and relevance in the modern context. Ancient yogic philosophy remains relevant today, but particularly for women um, navigating modern pressures. Beyond physical fitness, yoga fosters emotional balance, mental clarity, and spiritual growth. Its practices help manage stress, enhance focus, and build self-esteem. As more women engage with yoga, they reconnected with a traditional that honors feminine wisdoms, resilience, and inner strength, reflecting a rich cultural heritage that continues to empower women across generation and societies. Now, come to the conclusions. Yoga in ancient India was inclusive, empowering women to integrate spiritual practice into daily life, rooted in equality and inner strength. This tradition continues to inspire women today. Thank you, sir. Thank you very much, Nirmal ji. I would Sir like to, Nimai. Sir, my name is Nimai. uh, pardon me, uh, Nimai Sarfaj. Nimai Yes. Sarkar. Thank you very much for your presentation. I'd like to invite Dimple P. Thakkar ji for her presentation. Hello, good evening. First of all, happy International Yoga Day. For the theme is One Earth, One Health, and the thing is that we are united as a huge dhatu, like we are united from the different state of the India and the overseas. So first of all, congratulations to all to celebrate on the virtual mode. I'm coming to my points. I'm Dimple Thakkar from Gujarat, Surat, and I am a certified international yoga teacher. And as well as I am a certified by the government of the Gujarat and serving as a yoga coach from the government of Gujarat. And I teach and I make people who wants to be a teacher, yoga teacher. And one more thing, I have present my article in the international magazine for the yoga and the numerology. So it's a combination of the both. So thing is that, and I'm coming to the point. Today I want to talk about a topic that's very close to my heart, women's menstrual health. The topic is women's menstrual health. Menstruation is a natural part of life, but for many women, it can be source of discomfort,
pain and distress. As we all know, menstrual health is not just a physical issue but also an emotional and mental one. The symptoms of PMS, irregular periods, and hormonal imbalance can be overwhelming and affect daily life. But what if I told you that there is a way to manage these symptoms and improve overall menstrual health? That's the way is yoga. Research paper on the benefits of yoga for women's menstrual health and pain management. Here is the brief summary. The study explores the impact of yoga on menstrual health, focusing on physical symptoms like cramps, bloating, fatigue, as well as emotional symptoms like mood swings, anxiety, etc. The research involves a structured 8-week yoga program with 35 participants incorporating asanas, pranayamas, and mudras. Key findings include significant reduction in menstrual cramps, bloating, and fatigue, improved regularly for menstrual cycles, enhanced emotional stability and reduced mood disturbance, better sleep quality and energy levels, increased body awareness and self awareness. The study suggests that the yoga can be a valuable tool for the managing menstrual health, offering a holistic approach to physical, emotional, and mental well being. In conclusion, yoga is not just a physical practice but a way of life. It can help us cultivate awareness, balance, and harmony in our bodies and minds. And for women, it can be a powerful tool to manage menstrual health and promoting overall well being. In addition, I would like to add one or two case studies which I have done uh, from the yoga menstrual pain. Like you can say that one of my students have menstrual pain like anything like the cramps and bloating in every period, and they have a very irregular period. Once I have make them done regular yoga classes for the 1 month, and in within a 1 month, for the next month, she got the result. Like she has no pain, no mood swings, and no menstrual cramps in the body. So she was very happy. और फिर दूसरी एक स्टूडेंट थी, उनका मैंने केस स्टडी किया था, तो उनको एंगर इश्यू था और स्लीप इश्यू था। और लाइक एवरीवन नोज दैट अगर आप मेंस्ट्रुअल पीरियड में आ रहे हो तो बिफोर 1 वीक you have a tenderness in the body, mood swings, and of course anger issue with the family members. And if not understand the family members, it will be a havoc in the life. So uh, she had a same issue. So थोड़ी सी गाइडेंस के बाद उसको विद इन 2 or 3 days उनको स्लीप इम्प्रूव हुई। और 1 महीने के बाद या फिर आप बोल सकते हैं 1.5 महीने के बाद उनकी जो एंगर इश्यू था, जो पीरियड में आई, वो पता ही नहीं चला उनको कि मैं कैसे आई। और मैम आई वॉज वेरी हैप्पी दैट मुझे पीरियड आया, पता ही नहीं चला। तो ये है योगा की इम्पैक्ट। एंड आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग दैट ये एक particular yoga that doesn't mean one asan, one pranayam, or like for the something like yog nidra or meditation. It's a combination like yam niyam asan pranayam dharana dhyan samadhi. सो आपको यम नियम का पहले पालन करना ही पड़ेगा, फिर ही आप आसन कर पाओगे। अगर आप जंक फूड खाओगे, पीरियड से पहले आपको वो होती है, क्रेविंग होती है कि क्या खाऊं मैं, कुछ भी खाऊं, जंक खाऊं या कोल्ड ड्रिंक पी जाऊं या फिर कुछ भी ऐसा स्पाइसी, बट यहीं पे आपको स्टॉप होना है। उसी टाइम आपको जो भी जो फूड इम्पैक्ट है वो आपकी बॉडी पे जाएगी जाएगी, तो वो फूड आपको अवॉइड करना है। टेक अ सात्विक फूड like a खिचड़ी और like fluids in the body and fruits. So वो आपकी जो बॉडी में जो स्पाइसीनेस जो होती है, तामसिक गुण होता है,
वो आपको कम होगा। और इसी हिसाब से पीरियड में जो आपको जो होता है, एंजाइटी होती है, कभी कभी किसी किसी को 40s के बाद या विद इन द 40s आपको एंजाइटी इश्यू आता है मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम पे भी, और वो रोती भी है। तो ये सब आपको कम होगा फूड से। तो ये फूड इम्पोर्टेंट है। एंड देन आप जाओ आसनास पे, वो रेगुलर करना है। पीरियड में कुछ कोई आसन करना नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, और वो आपको पहले करना है, तो वो पीरियड का पेन कम हो जाएगा ऑलरेडी। आप होम रेमेडीज कर सकते हो, लाइक हॉट वाटर बैग और नाड़ी शोधन प्राणायाम, वो सब कर सकते हो। तो ये होता है, उसमें मूड स्विंग कम होते हैं। जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जैसे लाइक एवरीवन हैज एंजाइटी प्रॉब्लम, एंगर इश्यू एंड स्लीप डिस्टर्बेंस, दे हैव chin hair, facial hairs and tenderness in the body and swelling, तो वो सब दूर होता है योगा से। योगा means not just the asan. I am just trying to say that yoga is food, asanas, pranayama, and yog nidra, and then you will go to the dharana. We are all doing the dharana in this time. We can't reach to the samadhi path. तो वो होता है, समाधि के लेने के लिए यम नियम का पर्टिकुलर पालन करना ही पड़ेगा, फिर ही आप समाधि तक पहुंच सकोगे। लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल इन दिस वर्चुअल वर्ल्ड दैट वी हैव वेरी रेडिएशन इन द एटमोस्फियर एंड वी आर यूजिंग दिस गैजेट्स लाइक दिस। सो ये है हमारा। तो ये सब ना हो तो इसके लिए हमें मेडिटेशन जरूरी है। तो उससे क्या होगा कि हम अपने आप को सुन सकेंगे, दूसरा को आंसर देने से पहले अपने आप से बात कर सकेंगे, हैवोक होने से पहले जो हड़बड़ी होती है उस टाइम, जो स्वेटिंग होती है बॉडी में, वो सब नहीं होगी। आप कूलिंग प्राणायाम लाइक चंद्रवेदी प्राणायाम, शीतली सितकारी प्राणायाम कर सकते हो उस टाइम बॉडी में। और आप एक आराम से बालासन कर सकते हो या शवासन कर सकते हो। और उसमें बहुत सारे आसनास है, उससे पहले करना है, बाद में नहीं करना है, उस टाइम नहीं करना है। तो ये आपको इम्पैक्ट दिखेगी। और आज मॉर्निंग में मैंने 6:50 मतलब 6:30 से 11 तक 650 लोगों को योगा करवाया है सुबह। इंटरनेशनल योग डे का सेलिब्रेशन था, आयुष मंत्रालय से भी मैंने सेलिब्रेशन करवाया, और हमारे गुजरात राज्य योग बोर्ड सूरत में भी एक सेलिब्रेशन था, तो वहां पे भी करवाया मैंने। एंड दे विल लाइक कि ऐसे कैसे हो सकता है मैम। वो स्टूडेंट आके स्टेज पे बोला कि मैम सिर्फ 5 मिनट्स मेडिटेशन मैंने करा, आपने करवाया, तो 5 मिनट्स में मुझे ऐसा लगा मैं हवा में तैरने लगा, इतना लाइट फील हो रहा था। और सारे बच्चे सुबह से आए हुए थे, तो वो सब लाइट फील कर रहे थे, तो उनको मतलब थकानी नहीं लगी कि मैम वी ऑल आर फीलिंग वेरी फ्रेश। तो इट्स अ लाइव एग्जांपल ऑफ द योगा। एंड आई वुड लाइक टू से हर वुमेन को ये योगा योगा मतलब आसना करना ही चाहिए, बिकॉज उनको घर का भी होना चाहिए, अपना भी बैलेंस करना है। और जब भी आपको हार्मोनल इम्बैलेंस लगे, जस्ट टॉक टू द फैमिली लाइक दिस इज माय पीरियड डेट, प्लीज कोप अप विथ मी। एंड आप मेडिटेशन करिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी को एक्टिव करिए, तो आपकी जो वात पित्त कफ है वो बैलेंस होगा। आपके फूड में चेंजेस लाइए, बस यही करोगे तो डेली लाइफ में इतना ही करोगे तो आपको मेंस्ट्रुअल पेन में रिलीफ मिलेगा, मेरा यही कहना है। और ओवरऑल एक पर्टिकुलर डिजीज नहीं, या फिर मेंस्ट्रुअल पेन, या फिर डायबिटीज, या फिर हेडेक, Madam, ऐसा please नहीं try to conclude. है। आई एम जस्ट कंक्लूडिंग, ऐसा नहीं है। सो इट्स लाइक दैट कि आप आपके ओवरऑल वेलबींग के लिए, होलिस्टिक के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए योग इज अ वेरी नीडफुल टूल to survive in this world, like I say. And the most thing is that yoga influencer is I was appointed as a yoga influencer from the Ministry of the Ayush. So I just say that Mr. Amitabh Bachchan and Narendra Modi, they are a true example of the energetic yogi. And I have met Mr. Bachchan too.
and I have discussed about the yoga too. So that's it for today, and I have already presented the full research paper to the Sastrik, and thank you, Sastrik, for this giving me this wonderful opportunity to present myself. Thank you. Thank you, Dimpleji. Uh, I'm inviting now Raman Devnath ji. Please proceed. Okay, sir. Okay, I will presenting my paper. Am I audible or visible, sir? Cautious about the time. Sir, am Yes, I go ahead. audible or visible? Am I visible, sir? Yes, you are audible, Ramanji. Am I visible? No, you are not visible. I think your camera is Okay, off. okay. Okay, okay. I will try. Sir, am I visible? Yeah, please proceed. Okay. I am Roman Devnath, Department of Philosophy, Research Scholar, Tripura University. First of all, I would like to wish to everyone a happy International Yoga Day. Now come to the my paper. My paper title is Role of Yoga in the Empowering Women for Atmanirbhar Bharat. Sub-theme of the title, Yoga for Women in Workplaces and Household, Stress Release, Mental Health, and etc. This is introduction slide. The fundamental objective of Atmanirbhar Bharat Abhiyan is to become self-sufficient or provider to the entire world. Without women empowering, it will never be possible to make a Atmanirbhar Bharat. And that's why it's important for women to maintain good health. Yoga will play a very vital role in maintaining good health among workplace women. 12th May 2020, Prime Minister Shri Narendra Modi ji launched this economic package of self-reliance, which share some characteristics with Swadeshi movement of 1905 under the British control. In the vision of New India, empowering women play vital role. So it's our ethical responsibility to extract caring our Nari Shakti with the help of yoga for healthy life. Yoga is a very vital essential for developing immunity and resilience with women and offer a holistic approach to development and concentrating on women health. Conceptual framework Atmanirbhar Bharat Abhiyan. The conceptual framework of Atmanirbhar Bharat, that means self-reliant India, it aims to make the country and citizen independent and self-reliant. Empowering women can help society to grow and develop at a faster pace. Women are the backbone of this campaign success. Without women empowering, Atmanirbhar Bharat cannot be successful. Women empowering in India. India has made remarkable strides in empowering women, focusing on their safety, security, and economic independence and social inclusion. The ministry has formulated Mission Shakti, an integrated women empowering program as umbrella scheme for a safety, security, and empowering of women for implementation during the 15th Finance Commission period from 2021 to 22 to 2025 to 2026. Healthy women essential for India's development. Women health is vital to individual well-being and family strength and societal progress. Nowadays, all women are playing dual roles like caring and burden and working outside to help their family financial. Women also extra caring of burden of family like others work
Yoga exercise is help to our nation building Nari Shakti, such as emotional development, reduce mental stress, physical health, and spiritual development. Here I will mention to everyone, most of the person say yoga is a religion. Actually, yoga not a religion. Yoga is point of view to our health, so such as emotional, mental health, spiritual health also. Significance of yoga exercise in women life. Yoga offers significant health benefit for women and impact their health both physically and mentally. Yoga is not a religion, it's a lifestyle whose goal is a healthy mind in a healthy body. Yoga is important for women. It's offer a wide range of benefits for physical and mental health. These benefits include improved flexibility, strength, balance, and posture, as well as stress relief, anxiety reduction, and better sleep. Atmanirbhar Bharat and empowering women in India. Atmanirbhar Bharat aims to boost domestic production and reduce dependence on imports, and women empowering initiatives are key to realizing this vision of new India. Atmanirbhar Bharat promotes financial inclusion, skill development, and entrepreneur of women. Without entrepreneur, India will never become a Atmanirbhar Bharat. Atmanirbhar Bharat and women empowering are related with the play of vital role. Empowering women are fulfill the goal of Atmanirbhar Bharat. Need of yoga on women empowering for Atmanirbhar Bharat. Yoga play a significant role in women empowerment by promoting holistic well-being and encouraging self-discovery, resilience, and transformations. Women empowerment is crucial to realizing the dream of Atmanirbhar Bharat in New India, and to make this dream a reality. Yoga play a very important role in women health because it is possible to fulfill Atmanirbhar Bharat's dream through healthy women. Conclusion in my paper presentation. Now I will to express the conclusion very easily. For India women to perform their multidimensional role, they should be empowered with the health, and this status of health can be achieved through daily practice of the yogasana, pranayana, meditation, and shakti karma, which helps to promote a balance, develop a physical, mental, and emotional and spiritually well-being. Atmanirbhar Bharat Abhiyan will make individual economically empowered. India will be vibrant economically. However, this visionary Abhiyan may be filled without annihilating the gender inequalities. Women financial inclusion is significant for the growth of the Indian economy. So, in the vision of New India, empowering women play the vital role to fulfill the aims of Atmanirbhar Bharat, and thus India will be transformed into a self-reliant nation by developing healthy empowering women through yoga exercise. Thank you to everyone listening carefully me. Okay, thank you. And I also Thank you. like to gratitude my specially Shastrik and Deshyoga Charitable Trust. Thank you, Ramanji. We are expecting Devashri ji for her presentation. Devashri ji, please proceed. Devashri ji, are you here in the meeting? I can't see anyone here with the same name. So, okay, I think we are in the at the end of this session, this symposium. So from Shastrik, Mr. Shubhankar Das, who is also the coordinator of this symposium, to give the vote of thanks for
Shastri and the Deshyoga Trust, New Delhi. Namaste. This is Shubhankar Das, Academic Coordinator of Shastri Organization. As we have drawn to a close to this symposium on yoga for women's health, it is my distinct privilege to offer the vote of thanks. Firstly, our heartful gratitude goes to our esteemed speakers, whose invaluable insights have shed light on the yoga for women well-being. Your explanations were truly enlightening and have undoubtedly empowered us with practical knowledge. We extend our sincere thanks to all the scholars who have presented papers in this event for gracing this occasion and inspiring us with your thoughts. Our appreciation also goes to the Buddhadev Ghosh and the communication unit head Taposh Khara for managing this event in a flawless manner. We also thank to the organization like Deshyoga Charitable Trust who have shown their kind presence in this event. Your dedication is truly commendable. Additionally, a huge thank to our chairperson, Sri Supriya Goswami, for your enthusiastic participation and keen interest, which gave this symposium a resounding success. And finally, we'd like to thank to all the audiences present here. We hope you leave today feeling more informed, inspired, and motivated to integrate yoga into your life for better health. Thank you all once again. We look forward to seeing you at future events. Thank you. Thank you to Shubhankarji. Uh, we will conclude with the Shanti Patha. ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम् तत्सत् Thank you to all.